Right. So have you ever experienced? थोड़ा बहुत, yes. With respect to long time back. I mean, my first experience of that was late 90s when I went to a pranic healing workshop. 2 दिन का workshop था, and then they helped to sensitize your hands and try to feel the energy and Okay, those okay. kinds of That things. thing you have done. थोड़ा बहुत, yeah, but I have not continued to practice that or anything like that. And sometime in 2000, I don't remember when, around 2013, 14 child, uh, I got some information about Reiki, and one of the Reiki masters actually helped me do that. I was doing that for some time, Okay. but again, I have not continued to actually do that. कोई बात नहीं. So today we'll be doing sensitization process. How to help your hands feel the energy, right? Are you able to see me properly? हाँ, बिल्कुल. Hmm. हाथ नहीं दिख रहा है पर. हाँ, हाथ में वही 1 मिनट थोड़ा सा हमें ना अभी we are not like okay now हाँ, it's happened. हाँ, Clear? बिल्कुल बिल्कुल. Okay. So what we need to do is just the way I'm doing, just follow. With the count of 10 each aspect. Then thumb and this. Press it tight. 10. 10. Both this will also go like this. Then this with the count of 10. This. This. 10. This with the count of 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 10. Then count of 10. With closed eyes, try to feel whatever you can feel on your palm, fingertips, hand completely. कुछ फील कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल. There's a lot of vibrations in the hand. Lot of vibrations यहाँ भी, सर में भी. I think something down the spine भी feel हो रहा है.
एंड ऐसे फील हो रहा है कि हाथ में कुछ भारी सी वजन पकड़ा दी हो। एग्जैक्टली। तो ये चीजें आपने कभी पहले नहीं, फील की थी? नहीं, दिस नहीं, इज फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं। So basically what happens, actually we are living with energy, in energy, but unfortunately or fortunately nobody taught us. हम कभी एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने से तो इट्स ओके, but many a times it happens that when I'm talking about, I'm using, many a times it happens like we means a generalized statement, right? सही है। We come on this planet, take birth, we come here, and we go without exploring it, energy. It happens most of the times. But we got an opportunity to realize, to understand, yes, there is energy. We are continuously being, benefited, and maybe because of the things we are using, कभी कभी हम उनका पूरा benefit नहीं भी ले सकते, right? एंड कई बारी यूजिंग आवर ओन वर्ड्स हम उनको जो बेनिफिट मिलना होता है उसकी जगह उसका नेगेटिव हो जाता है। सो एनर्जी फील्ड में हम रह रहे हैं, तो जितना इसका हम पॉजिटिवली इसको हेल्प कर सकते हैं अपने आप को कि ये हमें इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली, उतना हमें करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी शुड डू। सो अब यही एनर्जी को हम डिफरेंट तरह से थोड़ी टेक्निक्स यूज करते हुए इसको स्कैन करेंगे टू सच अ लेवल कि हम ये इसको महसूस कर पाए। कितना कर पाए, कब कर पाए, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेटफॉर्म, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट गो में many a times it happens, people don't realize certain things. You are able to realize, it means yes, you are having a good platform. When I'm saying good platform, it doesn't mean कि हम लोग बड़े वो डिफरेंट तरह से हो गए। इट मीन्स यस, हमारे कुछ संस्कार, कुछ हमारे एक्सपोजर लेवल्स इस तरह के हैं कि हम ये इसको जल्दी सेंस कर पाए, राइट? इसका यही मीनिंग है बस। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हमने ये फील किया, जो भी आप फील कर पाए बॉडी में, इट इज एब्स्ट्रैक्ट कि आप क्या फील कर पाए। हम कहते हैं अच्छा फील कर पाए। अच्छा मीन्स 1% भी अच्छा है एंड 100% भी इट्स अच्छा। लेवल्स चेंज होते जाएंगे। सो कभी भी हम पूछते हैं हीलिंग के टाइम पे, या जिसको पता है कि जैसे सपोज किसी को पेन नहीं है, दैट इज 100%, जीरो, मतलब नो पेन एरिया में। हीलिंग में बहुत पेन है, तो आई आस्क दैट पर्सन कि कितने परसेंट रिलीफ हुआ। बिकॉज रिलीफ इट्स एब्स्ट्रैक्ट। आप बोलोगे थोड़ा सा हुआ, अच्छा लगा, एब्स्ट्रैक्ट। कितने परसेंट, उसको हम थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी वो कहेंगे ना, कोई लिमिट्स नहीं है, बियॉन्ड लिमिट्स। सो हम जितना अपनी नॉन डोमेन में इसको समझने की, मतलब रिलेटिवली समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। तो सबसे जो सही सा लगता है तो वो कितना परसेंट, बिकॉज नॉन डोमेन में जो भी हम जानते हैं, चाहे वो नो पेन एरिया हो या पेन एरिया हो, उसमें कितना परसेंट रिलीफ या उसमें कितना परसेंट फर्क, राइट? तो अभी हम इसको एनर्जी को बिटवीन द हैंड्स फील करने की कोशिश करेंगे। अगेन यू विल बी डूइंग सिंपल, just this is simply you are feeling that. Can you feel something between your hands? Keep your hands wide open, give space between the to your hands, so that actual feel वो कर पाए कि कहाँ से क्या डिफरेंस, किस लेवल पे आपको क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद व्हेन यू आर कमिंग क्लोज, आपको क्या फीलिंग हो रही है, उसके बाद और क्लोज में, और एक फिर कॉम्पैक्ट फीलिंग हुई। तो
one is there is the hands seem sensitized, कुछ Right. vibrations feel हो रहे हैं, हाँ, and उसके बाद as I'm moving the hands closer, very slowly just keep your eyes, एक बारी मेरे को देखें आप, हाँ हाँ फिर उसके बाद आप करने की ठीक कोशिश। ठीक Keep your hands wide open. Just try to bring them close very slowly, very slowly. थोड़ा थोड़ा पीछे होके फिर आगे आना है। वो जब आप देख रहे हैं, मतलब उसको महसूस कर रहे हैं, कीप योर आईज क्लोज्ड सो दैट आपको एक विजन भी मिलेगा उसका एसोसिएटेड विद व्हाट यू आर इनटू, राइट? तो लेवल्स भी आपको समझ में आएंगे। यहाँ से हाथों में अगर सपोज वाइब्रेशन थोड़ा सा, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है सपोज, या हैंड्स के मसाज की वजह से या रबिंग की वजह से कुछ एक वो जो सेंसेशन है वो डिफरेंट है। बट व्हेन यू कीप योर हैंड्स वाइड ओपन एंड ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे यू फील सर्टेन चेंज इन द सेंसेशन. When again you try to bring them close, if it is not very very concentrated, कि आप उसको बहुत सॉफ्टली अंदर की तरफ ला पाए हाथों को और उसको फील करने की कोशिश करें, ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और फील करें और फील करें जब तक कि आप इसको, ये पूरा आपको बॉल जैसा समझ में नहीं आ रहा ना, तब तक के लिए कोशिश करें इसको और पास में लाने के लिए। बाउंस कितना है यहाँ पे, बाउंस अगर देखें तो इतना ज्यादा नहीं है, बट व्हेन इट कम्स क्लोज तो बाउंस जो है ना, यू फील अ हीट, यू फील सर्टेन कुछ फीलिंग है कि ये एक स्पंज और एक बबल जैसा फीलिंग है, एंड इट्स बाउंसिंग, राइट? वो सिर्फ सॉल्ट नमकीन है, वो पता तभी चलेगा when you'll taste it. Feel it, then you'll realize yes, there is something. Yes, sir. हाँ, यहाँ यहाँ महसूस हो रहा है कि कुछ वो बॉल है जो रिपेल कर रही है, so that Okay, one more so thing.
open your eyes. One more thing. Why you are using only one hand? नहीं दोनों हैं. I think it is not visible. हाँ, थोड़ा सा मतलब मेरे को आपका नेवल तक का पूरा, नेवल टू दस पूरा दिखना चाहिए. रीजन मीन ऑरा एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा सर को ऊपर करेंगे. नहीं, सर दिखना चाहिए मुझे. हाँ, एग्जैक्टली. क्लियर. ठीक है, परफेक्ट. मेरा क्या है मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं यूज टू नहीं हूँ लैपटॉप से करने में, दो इट इज वेरी कंफर्टेबल. बट अभी थोड़ा सा मेरे को शायद थोड़ा सा टाइम, जो अगर आपको मेरा लाइक मैं जो बता रही हूँ वो क्लियरली नहीं पता चला, तो मेरे को शायद इसको थोड़ा सा और. नहीं मुझे पक्का दिखाई दिया. राइट. एब्सोल्युटली. ओके. तो ऐसा है कि अपने हाथों को ना हम कोशिश यही करेंगे, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे एनर्जी स्कैनिंग में, अपने हाथों को ना बहुत पास में नहीं रखना. ट्राई फर्स्ट डे से ही ट्राई ये करना है, थोड़ा सा दूर रख के करना है. ठीक है, बिकॉज टुडे यू आर जस्ट स्कैनिंग XYZ, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, लेकिन कभी आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी स्कैन करेंगे. सो मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस. यहाँ बाउंस महसूस हो रही है. Try to bring them more close and concentrated. देखिए सबसे ज्यादा concentrated कहाँ पे आपको पता चल रहा है? Oh yeah, this is the most. You feel the difference? Yeah. When the repulsion was हल्का सा, the repulsion जब जैसे the spring action जो so यहाँ repulsion बहुत ज्यादा. थोड़ा सा और पास पे कोशिश करें, and there will be more concentration of like whatever is there between your hand. Try to bring them close and see how much bounce it is giving to your hand. और एक पॉइंट ऐसा है उसके बाद में आपको लगता नहीं है, now it's not moving inward, it is giving a big bounce. लग रहा है? हाँ, अभी the push is more. I can also feel a little bit of heat. Yes. Heat के साथ में मतलब there is one more sensation, maybe you are not able to name that sensation, because many a times how much it happens, it is irrespective how much literate or well learned we are, but when we are in this realm, we always find scarcity of words to express ourselves. कुछ tingling हो रहे हैं यहाँ. हाँ. So 1 or 2 fingers only, not all of them. जैसे ये हो गया और ये हो गया, not others. Okay, right. Open your eyes. तो ये सेंसेशन आप हमेशा से कर सकते थे,
लेकिन शायद आपने आज फर्स्ट टाइम किया है. ऑलराइट, ओके. तो बेसिकली अभी हमने जो भी किया, दैट इज पर्टेनिंग टू सेंसिटाइजेशन ऑफ हैंड्स एंड ट्राई टू फील द एनर्जी, राइट. इसको हमने प्रैक्टिस करना है, नंबर 1. और हमने बेसिकली अभी कुछ क्लासेस में, एक तो एनर्जी का स्कैनिंग, सेकंड इज एनर्जी को देखने की कोशिश, ऑरा को देखने की कोशिश. जो भी कोई चीज है दुनिया में, हर चीज का ऑरा है. आप ओके, आपने जो चीजें देखी होंगी उनका एग्जांपल देते हैं, ठीक है. तो कभी दूर से अर्थ को के फोटोग्राफ्स देखे हैं? हाँ. तो अर्थ है कॉन्सेंट्रेटेड मास के अलावा देयर आर सर्टेन एक क्लियर पिक्चर नहीं आ पाती. व्हाट इज दैट? लोग कहते हैं गैसेस हैं, लोग कहते हैं ये है वो है. व्हाट इट इज द ऑरा. एवरीथिंग हैज ऑरा. हम बहुत सारा वो क्लीन और पिक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी चीज अगर हम नेकेड आईज से देख रहे हैं उसका ऑरा है. बट हाउ मच प्रैक्टिस वी हैव डन or how much observant we are to understand that it from which point it is starting until which point it is. It depends upon the practice. That's it. प्रैक्टिस कैसे करें? तो you should keep feeling. No, I'll tell you how to go about it. So, likewise, have you ever seen the aura of anybody? See, once or twice. I don't know whether it is aura or not. But it happens when the normal vision is not very clear, and you tend to actually see through the person. The some small extension या outline, जैसे मैं हूँ यहाँ, तो इतना थोड़ा सा it feels like something किसी ने उसका sketch बना दी हो बाहर, something like that. A little part of that, not the whole thing, but that happens only when I'm not able. The normal vision is not very crisp. Very few times that I have actually seen that, but उसके अलावा कुछ नहीं देखा. होता क्या है ना, when you use specs. हाँ. Okay, होता क्या है, इसका साइंस क्या है पीछे से? You might not have gone through that. You might have seen that, but कैसे हुआ ये नहीं पता. जब आपका विजन, वैसे आई साइट का प्रॉब्लम थोड़ा है आपको, without specs you cannot see clearly. Correct, that is from 9th standard. Yeah. And when without specs we try to see something, we are putting more attention to see how exactly is that. क्या शेप है, क्या कौन पर्सन है, क्या उसके फीचर्स हैं, whatever. When we are doing that, कहीं पे हमारा एक फोकस बन जाता है, मे बी नाक या होठ या कहीं पे भी. तो जब वो बनता है तो डेफिनेटली ये क्लियर होएगा ही होएगा, ये अपरेंट है ही है, मान के चलिए. सो मैं वैसे आज आपको ये क्लास ये नहीं करवाने वाली थी, बट कई बार होता है ना, हम कोई चीज एक ट्रिगर कर देते. You just do one thing. Where are you sitting, on table or what? नहीं, ये बंक बेड है, ये उसके ऊपर बैठा हूँ. ओके, आपके पास में कोई पिलो होगा साथ में जिसमें व्हाइट कलर, प्लेन व्हाइट कलर या प्लेन पेपर, कुछ भी, एनीथिंग. प्लेन पेपर ला सकता हूँ. प्लेन व्हाइट वॉल है सामने? नहीं, ये क्रीम कलर है वॉल. विल डू. लाइट क्रीम कलर ना? हाँ, लाइट क्रीम कलर. Keep your thumb against wall. Suppose this is wall, this is wall, and just keep against this wall. मतलब दूर ही हो, कोई बात नहीं, इतना पास नहीं ले जाने की कोशिश. It should be a clear background. That's what I need. ठीक. Against clear background, white background, just put your thumb like this. Nail अपनी आंखों की तरफ रखना है and थोड़ा distantly. Try to see the root of nail. Focus on root of nail. You can remove your specs also. You can do it with specs, without specs.
Just try to feel that. Oh yeah, so now I can see a small outline outside the The ये color जो of outline. yeah color नहीं दिख रहा है पर it is some Okay. it feels like it is a small outline along, maybe somebody has drawn something. Yeah. Now do one thing. Connect तो your ये tongue. Connect sorry? your tongue to your palate. जीभ को तालू के साथ में लगाइए. Tongue Like to this? palate. ठीक. Now try to see that. Oh, it is easier to see. Okay. What else can you see there? Oh, the outline of my finger does not seem to be stationary. वो हिल रहा है. I mean, it's like. कोई बात नहीं. So that and the boundary seems to be sometimes smaller, sometimes bigger. कोई बात नहीं. There is not just one outline. There is more than one outline. How इसमें can you say? एक closely एक है, एक slightly bigger one भी है एक, वो जो दिख रहा है, but that is not as prominent as the closer one. That must be little bit transparent. हाँ, exactly. उसके बाद में. Exactly. The closer one is white. The slightly wider one is Now you are able almost to see transparent. the color also, right? And what else? Next one. No, I don't see any other color apart from white. कोई बात नहीं. बस उतना ही दिख रहा है, मतलब I don't know what else. ठीक है, कोई बात नहीं. आप कुछ पानी वानी पीना चाहेंगे, पी सकते हैं. नहीं, perfectly fine. Okay. मैं ना आज आपको एक छोटा सा मेडिटेशन कराती हूँ. We'll be taking just 5 minutes and we'll be just redoing all the things, whatever we have just done. All right. So डॉक्टर साहब के साथ में आपने काफी देर से मेडिटेशन कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 1 मंथ से कर रहे हैं. 1 month से, exactly. वो बहुत हाई लेवल की मेडिटेशंस हैं. तो अगर आपने वो करी है तो डेफिनेटली ये मेडिटेशन और अच्छी तरह से आप देख पाएंगे. आईज को वैसे ही क्लोज रखना है till I tell you to open your eyes, and before opening eyes हाथों को अच्छी तरह से रब करके दोनों आंखों पे लगाना, और उसी के बाद में आप आंखें खोल सकते हैं. Third eye intersection point is exactly if you mark a line between your two ears, imaginary line, that would be crossing your brain,
Second line from the uppermost point of skull to the lowest point of tailbone. Where these two lines are intersecting, mark a point there. Right? Keep your spine straight. अच्छा, पहले मेरे को एक बात बताइए, आपको कुछ अभी वर्क काम करना है? अभी कुछ काम की पेंडेंसी है आपके ऊपर? हाँ, वो तो होता ही है ऑलवेज. नहीं, अभी इस टाइम डोंट कैरी दैट, बिकॉज इफ यू विल कैरी दैट थिंग व्हिच आई कुड सी, तो मेडिटेशन इतना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. ठीक है, आई विल ट्राई टू ड्रॉप दैट. ठीक है. Say to yourself, after 20 minutes, I will be assigning work to myself. Till then, I don't have to do anything. सिर्फ मेडिटेशन को एब्जॉर्ब करना है. ठीक है? Okay. Keep your spine straight. When I'll chant Shreem, you have to inhale till your navel. And when I'll chant Hreem, you have to exhale. It would be guided. Shreem. 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 One quick question. This is, it feels like a very short breath. मुझे तब होल्ड करना पड़ेगा या should I continue inhaling or exhaling? Okay. Shreem, when I chant Shreem, I'm taking a full breath. Shreem. It's going inside. You have to breathe in. Feel the breath till your navel. As you are breathing, you can identify till which level you can breathe in. Normally, when you breathe up till which level? It can go to the legs also. It can go. No. It can go. Normally, I breathe only with my stomach. Diaphragmatic breathing mode. Upper area. नहीं, lower area. नेवल तक फील करते हैं. ओके, तो वहीं तक आपको फील करना है. लेकिन व्हेन आई विल चैंट श्रीम, यू हैव टू फील टिल योर नेवल, ब्रीथ आउट टिल योर नेवल. ठीक है, तो उस बिटवीन देम कुछ पॉज करना है क्या? नो, श्रीम के बाद कंटिन्यूटी में रीम है. देयर इज नो पॉज एज सच. एंड रीम के बाद भी कंटिन्यूटी श्रीम है. श्रीम रीम विल गो. हम 2-4 बारी ये करके हम थर्ड आई इंटरसेक्शन पे चले जाएंगे, वहीं पे चैंट करेंगे. And be observant about the entire process. Third eye intersection में chanting होएगा. There will be soft chanting. There will be fast chanting. What impacts? You just have to be observant and be there at that point. Being with that point, you just have to be drashta of that point. Just need to be observant there. You need not to imagine or invoke anything there. You just be drashta, just free flow with the flow while being there. That's it. Start करते हैं. And don't open your eyes. और अभी कोई question नहीं बीच में, right? Okay. Shreem. 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 Now
very softly, we'll shift our attention to the third eye intersection point. And at this point, you just need to be drashta. You need not to invoke or imagine anything. Just flow with the flow while being at that point, being a drashta of this point. मैं मंत्र उच्चारण करूंगी. श्री श्री Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. हमने मंत्रोच्चारण द्वारा अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे बहुत सी ऊर्जा अर्जित की है. इसको आप महसूस कर सकते हैं. अब इस पॉइंट से ऊर्जा को हम अपनी समक्ष चक्रों से ऑर्गन्स से सेल्यूलर लेवल तक जाते हुए महसूस करें. एब्जॉर्ब करने के लिए अगेन आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें और मैं मंत्र उच्चारण करूं. श्री
You can be in this state as long as you want to be, but before opening your eyes, rub your hands hard to make them warm. Place them on your eyes and touch every part of your body, especially those areas where there was discomfort or there is discomfort or pain. Touch those very areas and then you can open your eyes. I repeat, before opening your eyes, rub your hands hard, make them warm, keep them on your eyes, and on each part of your body, especially those areas or those parts where you were feeling or you are feeling pain or discomfort. Excellent thing. I just did not want to come out of this. So, चीज है कि when you were chanting faster, at that place, कुछ तो ऐसे flame की तरह something was. I mean, there was vibration that was actually I was feeling. That third eye chakra exactly at that point, and actually not just at that point. So that vibration was
beyond that, I mean, sir se, I mean, it came up to here, and then when you asked me to remove algebra polynomials and going to the cell level, वगैरह, that spread to the entire body, no exceptions at all. Entire part of the body, and it felt extremely good here. And it's pardon? Felt extremely good here, यहाँ chest area में जो अनाहत area में. And even now, I'm actually listening to a specific frequency जो श्रुति की तरह चल रही है. I mean, it's like so that thing, that unstruck sound, that anahat unstruck sound that I can hear whenever it is silent. It's always there, but वो loud हो रहा है. It's a lot louder, and it is. And when I नाभि तक जब the breath reaches and I extend it there, then I feel some pain here. Yeah, on the left side a little bit, and sometimes on the right side, which is why I actually kept here. उसके बाद there are lots of areas where it feels extremely good. Sir, I mean, all the entire chest area, legs feel very good, back feel good. I mean, except that this part, I mean, there's a little bit of pain when I stretch the inhale past nabi. Sorry, your video and audio was paused, so I couldn't hear you. Oh, okay. क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच लगा, पेन था थोड़ा सा. हाँ, तो यहाँ I mean, especially exactly at that point, and that happens only when I stretch the inhale past nabhi. It comes to the nabhi, and then I can feel that, I mean, it can stretch further. जैसे नाभि expand हो रहा है, so it needs more breath. I mean, when I do that, then I start feeling some pain here. पता है क्या होता है? देखिए, मैंने आपको जब देखा ना, तो when you were sitting for meditation, तो फिर piled up work रखिए मत अपने ऊपर, सिर्फ इतना ही बोलना, आफ्टर 20 मिनट्स मैं सभी चीजें अपने आप को रीअसाइन करूंगा, एंड एक्चुअली यू डू दिस थिंग. आप कोई भी काम छोड़ के जब दूसरा काम कर रहे हैं ना, तो डोंट फील द बर्डन, और यू कैन नॉट, मतलब यू शुडंट फील लाइक कि देयर इज अ पेंडेंसी ऑफ वर्क. जैसे सपोज यू आर राइटिंग समथिंग एंड बीच में कुछ और काम करना है आपको, बिकॉज काफी बड़ा है वो राइटिंग, कोई एक मे बी कोई किसी को पिच करना है, कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी हो सकता है. तो दैट इज अ बिग थिंग. इन वन गो यू कैन नॉट कंप्लीट इट, राइट? उसको छोड़ के जब आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज मत रखिए कि उसको आपको वो इनकम्प्लीट है. ये फीलिंग ही अपने आप में ना, ये जो शोल्डर्स में जो दिख रहा था ना, ये वो है. Okay. Yeah, very, 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 very appropriate, because जितना भी मैं कोशिश करूं उसे छोड़ नहीं पाता हूँ. वो होगा कहीं, and as you said, I mean, it is there. वो apparent है, बहुत ज्यादा क्लियर है वो चीज. And the best part, I mean, especially last few days or few months that I have actually seen, usually I used to do yoga exercise first thing in the morning, जैसे उठ जाता हूँ वो करता हूँ. Then I did not feel very good about it, and I got up in the morning. First चीज, whatever मेरे जहन में है था, I'll just finish off all the work for about 1 to 2 hours. I would have called many people, I would have distributed work, I would have said, okay, do this, do that, do this. Then सब कुछ शांत हो जाता था. Then it is very, very प्रशस्त time, fantastic time for me to exercise and do yoga. I feel so relieved at that point in time. That is when I do yoga. वैसे तो you are very learned. This is what I can see. But जब आप बहुत जल्दी उठ सकते हैं और उठ के योगा कर सकते हैं, तो that is the right thing to do. Because time, हर चीज हर टाइम पे नहीं होती. कल ही मेरी और डॉक्टर साहब की बात हो रही थी, कुछ चीजें टाइम कंड्यूसिव ही होती हैं.
अगर मॉर्निंग में योगा करते हैं, अगर करते हैं तो योगा आप करते हैं आप, और मॉर्निंग में आप जल्दी अर्ली राइजर भी हैं, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप सुबह उठ के करें, सुबह उठ के वही पहली चीज होनी चाहिए। एंड अगेन इट्स जस्ट माइंडसेट, उसको थोड़ा सा चेंज करें कि मेरे को ये टाइम मी टाइम है, इसमें मेरे को यही करना है, और इसके बाद में फ्रेश असाइन करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे सिर्फ इतना कमांड देते ही अपने आप को ना, विल बी अ डिफरेंट पर्सन। सिर्फ इतना कमांड देते, एंड यू कैन बेसिकली फील दिस थिंग ऑल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना ही सही करने से। अभी I'll just take 1 second only, because कोई मांगने के लिए आया है, तो I just want please go ahead. Yes. One. Right. Thank you. Okay. जी. Just a second. Right. So अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, हाँ, तो ये मैं चीज बोल रही थी, सिर्फ अपने आप को ये कमांड देने के बाद में जस्ट फील योरसेल्फ एंड फील द डिफरेंस, राइट? इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, अभी नहीं पता चल रहा, बिकॉज शायद आप योगा कर रहे हैं, कुछ और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अगर पेंडेंसीज को ज्यादा रखेंगे, आई एम नॉट सेइंग पेंडेंसीज को ज्यादा रखेंगे, आई एम सेइंग कि ये थॉट ऑफ पेंडेंसीज को ज्यादा रखेंगे, थॉट ऑफ पेंडेंसीज को, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर शोल्डर्स, वो जो सर्वाइकल और ये सब चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी कभी कभी आप फील करते होंगे कुछ पेन और समथिंग? Sometimes, but generally I'm extremely fit. Very योगा मेडिटेशन जो लोग भी करते हैं उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं भी रहता चीजों का, बिकॉज वो लेट गो कर लेते हैं इन चीजों को। And to me, the thing that comes very naturally is awareness of breath, and breath के through I can live. For example, I'm frustrated with somebody, बात कर रहा हूँ उसके साथ, so immediately I can leave it out through the breath. चलो छोड़ दिया उसे. Good. So it is, so even if it is a very tense situation, then I don't know how people perceive, but internally मैं बहुत calm रहता हूँ. That is not an issue at all. ये आपको मतलब ये चीज बहुत पे करती है लाइफ में, जो इंटरनली काम है उसको चीजें सरफेस लेवल पे, है ना, समुद्र के ऊपर ही लहरें दिखती हैं। सबसे ज्यादा आपको कभी भी तेज नदी पे लहर नहीं दिखेगा, शांत नदी पे दिखेगा। सरफेस पे जितनी भी लहरें होंगी वो अलग बात है, लेकिन अंदर से काम ही होना चाहिए। तो वो जो कामनेस है ना, वो और ज्यादा डीप आदमी को ना समझ देती है, ऑब्जर्वेशन देती है, एनालिटिकल एबिलिटीज देती है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। नहीं इरिटेशन
होती है। गुस्सा आती है, but it is very much, I know that I'm angry. It is not that it is uncontrollable. But for me to stop being angry, maybe it requires some understanding of the situation or understanding of the other person, unke situation, vagera vagera, and the overall picture. And for me, it is very difficult to understand or do something if I don't have the big picture. I, I'll be I'll be like a worm, very I'll be in unrest. जब तक मुझे this is the big picture, then it is easier for me to actually get down. तब तक I will be like that. But what I mean by that is, जो उतावलापन होता है to learn something, to know something, वो होता है. It's like I'm not comfortable until that big picture is seen for me. जो भी मैं सोचता हूँ वो है big picture. It may not be the biggest picture, or it might not be the big picture, but when I am satisfied, तो ये this is how all these things fit together. ठीक है, okay. Then I can start working on the parts immediately. राइट, ठीक है सर। अभी ये जो भी है 10, अगेन आप इसके बाद में थोड़ा सा और अपने आप को रिव्यू करिएगा, ठीक है। एंड अभी एक क्विक, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 minutes, 5 भी नहीं, जस्ट 3 minutes आई सपोज विल बी सफिशिएंट फॉर यू। आप सिर्फ इसको अपना एक तो अगेन स्कैन को देखें, बट दिस टाइम व्हेन यू आर यूजिंग, आपको दो तरह से देखना है। एक तो सिंपली जैसे आपने थोड़ा सा हाथों को रब करके फिर फील कीजिए, एंड सेकेंडली टंग को पैलेट से लगाने के बाद में फील करेंगे, and see the difference in both the doing it after keeping your tongue connected and without connected में क्या difference आपने feel किया, number 1। secondly जब आप thumb को देखेंगे, aura देखेंगे, तो again वो तो आपने देख लिया, टंग को कनेक्ट करके ही आपने करना है। हमेशा जो भी एक्टिविटी आप से करेंगे वो टंग को कनेक्ट करके पैलेट से करना है, तो उसको एक बार ही देखेंगे थंब को, राइट राइट। तो स्टार्ट करें।
Uh, palate, the tongue is connected to the palate, the intensity is more. Or initially when I had not connected, unlike the first time, I was feeling coolness around my hands, though I rubbed it, it was very cool. पर जब palate से connect किया, then it started becoming hotter. But I still feel it is cooler. And when I connected the tongue, the sound that I'm hearing is very loud. I mean, itna ki at some point in time I could not concentrate on the hands at all. इतना loudly वो सुनाई दे रहा है मुझे. What was that sound? वो जो unstruck sound that I'm talking about, अनाहत करके ऐसे जैसे that is there always. That sound, that frequency. Is it the sound of tin? No or yes? Something like that. It's a different frequency, not that frequency. But it is something like that. I mean, there is no striking of that. I mean, which sound Continuation में रहता है वो. continuous. I mean, I don't know where it started, when it started, वगैरह. But continuously, I'm listening to that. I mean, वो होता है, but especially कोई metallic जब चीजें आपस में टकराती हैं ना, jingling, not exactly the jingling, a jingle, single sound, jingle. हाँ. उसके बाद में जो frequency vibration जाती है, टन of that, though mine is not a metallic voice. So it's basically what I call that. इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किए. झिंगुर पता है? झिंगुर जब आप डीप जंगल्स में कभी भी होते हैं ना, या स्पेशली रेनी सीजन में, एक इंसेक्ट होता है छोटा सा टिड्डा. Exact, something like that. Exactly like that, but it is just there all the time. But that frequency also changes depending on, sometimes it is higher frequency, sometimes lower frequency, sometimes वो जोर से होता है. Right. And if I'm really usually किस focused, टाइम पे होता है? when I'm alone, breathing is very shallow, almost to the extent where I don't need to breathe. When you are with yourself only, right? Mostly now it is not like that. Now it is when जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है. दो चीजें हैं सर इस पे. ये आपको कब से सुनाई देती है साउंड? शायद एक more than a year. अभी अभी स्टार्ट हुआ है शायद, yeah. और उसके बाद भी क्या प्लस माइनस देखते हैं आप अपने आप को? It's easier to accept. It's easier to accept things as they are. My understanding, empathy has increased. कोई बात नहीं, इसको और फाइन ट्यूनिंगली आप उसको और देखें, ऑब्जर्व करें. राइट. इसको और अच्छी तरह से आप देखें. अच्छा, आप जल्दी क्विक उसको देखें, थंब को.
मल्टीपल लेयर्स दिख रहे हैं, कलर्स नो कलर्स, कोई बात नहीं. जस्ट इनर वाला थोड़ा वाइट दिख रहा है बस, नथिंग एल्स. Then how can you distinguish between एक layer है या दो है? This is like multiple transparent layers, Okay. colorless. When you say multiple, how many layers are there? Just try and find that. No, I'm not able to see multiple. No, I can see only one. Because when you will try to count at night, it will vanish. It will be consolidated one layer. We cannot run after the layers. हाँ. है ना? वो थोड़ा प्रैक्टिस से वो भी देख पाएंगे आप, कोई बात नहीं. एक और चीज आपको करनी है, वो आप आफ्टर क्लास कर सकते हैं 5-7 मिनट्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने स्पेशली मेरे को बोला है कि जो है सर का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो अच्छी तरह से बहुत काम कर लें अपना. ही इज वेरी बिजी पर्सन. तो आई सेड ओके, आई विल ट्राई. ठीक है. तो अभी क्या करना है आपने, आप सिर्फ कीपिंग, अभी तो सन बार अच्छा है, क्लाउड्स तो नहीं है. क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स हैं. हाँ. नहीं, ये क्लियर स्काई वाले दिन करना है. हाँ, तो अभी तो पूरा क्लाउड्स है. मैं थिंक बारिश होने वाली है. प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग व्हेन देयर इज सनराइज हो चुका हो और सन आपके बैक पे हो. सन सामने, आईज के सामने कहीं भी, आपका पूरे एंगल कहीं भी सन नहीं दिखना चाहिए. 180 डिग्री, राइट. तो आपने ना सिर्फ स्काई गेजिंग करना है. ठीक है. और आपको जो कुछ दिखे ना, आपने वो रिपोर्ट करना है. Try to see something which is not seen actually by you. Which is not कोई ऐसे कोई पक्षी नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है. Even then try to see that sky. क्या दिखता है आपको उसमें, वो रिपोर्ट करना है. ठीक है. सो आज अपना सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं. ठीक है. Thank you so much. Thank It was you so extremely much. good.